today we are going to start your chapter 3, your next chapter, that is motion in a straight line. Now, before starting the chapter, first of all, I want you to know some terminology. So, first of all, the term is mechanics. Now, what is mechanics? Mechanics is a branch of physics which deals with the conditions of rest and motion. Means हमारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो रेस्ट में है या मोशन में है, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद दैट स्टडी इज नोन एज मैकेनिक्स. जो मैकेनिक्स ब्रांच है, इट फर्दर हैज 3 सब ब्रांचेस, दैट इज स्टैटिक्स, kinematics and dynamics. First of all, what is statics? Statics is that branch of mechanics which deals with the objects at rest. जो भी objects अगर rest पे हैं, अगर हम उनको study करते हैं तो we are studying statics. The next sub branch is kinematics. When we study kinematics, we study the object in motion. मतलब हम वो ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो मूव कर रहे हैं, जो मोशन में है, बट वी आर नॉट स्टडिंग द कॉज ऑफ मोशन. मीन्स जो उन बॉडी में मोशन है वो कहां से आया, वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट दैट. वी आर ओनली स्टडिंग दैट द ऑब्जेक्ट आर मूविंग. द थर्ड इज डायनामिक्स. इन डायनामिक्स वी स्टडी द ऑब्जेक्ट इन मोशन विद द कॉज ऑफ मोशन. मतलब जो बॉडी मूव कर रही है, what is the cause that the body is moving? That branch is known as dynamics. Next we have rest and motion are relative terms. Now to study this, first of all you should know what is rest. मतलब when a body is said to be at rest, कोई भी अगर बॉडी है, हम कब बोलेंगे कि ये बॉडी रेस्ट पे है? Whenever the position of the body does not change with respect to time, that body is known at rest. Means अगर ये ब्लैक बोर्ड है, मैं इसको as it is लीव कर रही हूँ ड्यूरिंग द वीडियो. अब टाइम पास हो रहा है, बट दिस बोर्ड इज नॉट मूविंग, बट द टाइम इज गोइंग ऑन, सो दिस बोर्ड इज एट रेस्ट पोजिशन. सेकेंड इज मोशन. नाउ इफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी चेंजेस with respect to time, then that body is said to be in motion. And the example is simple. You can take when you are walking, you are in motion. Any object whose position is changing with respect to time is known to be in motion. Next is rest and motion are relative terms. And what do you mean by relative? Relative मतलब जो एक body है, it can be in the position of rest as well as motion at same time. अब ये कैसे हो सकता है कि एक बॉडी रेस्ट पे भी हो और मोशन में भी हो? इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंसीडर एन एग्जांपल दैट यू आर सिटिंग इन योर स्कूल बस. आप अपनी स्कूल बस में बैठे हो, तो अगर कोई भी पर्सन व्यू कर रहा है फ्रॉम आउटसाइड द बस, फॉर अ पर्सन आउटसाइड द बस you are in motion because you are moving along with the bus, but for your friends who are sitting inside the bus with you, you are at rest because you are sitting, your position is not changing in with time. So अगर एक ऑब्जेक्ट है, it can be at rest, it can be in motion at same time, but it depends upon the point of reference. मतलब किस पॉइंट से हम उस ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं. अगर हम उस व्यू को आउटसाइड उस बस को आउटसाइड व्यू कर रहे हैं तो ऑल आर इन मोशन. बट अगर एक अंदर जो पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड, वो पर्सन व्यू कर रहा है, देन अदर पर्सन्स आर एट रेस्ट. सो यस, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम. Next is point objects. What is point object? Point object is if the distance traveled by an object is very large as compared to the size of the object. मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है as compared to its size. For example, अगर हम ले कि that train is traveling from Kashmir to Kanyakumari,
then the distance between Kashmir to Kanyakumari is very large as compared to the length of the train. So in that case, the train will be considered to be as a point object. Next, we are going to do the difference between distance and displacement. First of all, what is distance? Distance is the actual path traveled by a person from going from initial to final position, whereas displacement is the shortest distance between the initial point and the final position. Initial और final position में जो actual path covered है, अब जिस रास्ते से जाते हो, that is known as distance, और उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता है, the shortest distance, that is known as displacement. Distance is a scalar quantity, means in case of distance we only deal with magnitude, but displacement is a vector, means in case of displacement we take magnitude as well as direction. Third, distance covered can never be zero, but displacement can be zero if the position, if the body comes to its initial position. Means अगर आप घर से निकले स्कूल के लिए और स्कूल से जब आप घर आ जाओगे, the total you come to your initial point, then your displacement will be zero. Distance is the algebraic sum of all the distances. The total distance covered is always the sum of all the distance traveled, but the total displacement is always equal to vector sum of all the distance covered. Distance is always positive, but displacement can be positive or negative depending upon the point where we are viewing the displacement. Next, we have uniform motion. A body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. अगर कोई भी body है वो equal distance equal interval of time में cover कर रही है, then the body is said to be in uniform motion. And ज़्यादातर जो uniform motion है, it always occurs in a straight line. Next, for the expression for the velocity of the uniform motion is velocity is equal to displacement upon time. अगर कोई भी body है, it started from a position x0. जो body ने start किया at position x0, जब वहाँ time कितना था 0, फिर वो distance travel करके एक point पे पहुंच गई जहाँ पे distance था x and time taken was t. Then the velocity will be equal to x minus x0 upon t minus 0. That is x minus x0 upon t, or v is equal to x minus x0 upon t. Here we will get the value of x as, that is the total distance covered by the body traveling in the uniform motion is equal to the initial distance, मतलब जो initial position है, plus the velocity of the object multiplied by the total time taken by the object. Next, these are some important features of the uniform motion. First is the uniform motion does not depends upon origin. मतलब कहीं से भी आप start करोगे, that it does not, अगर आपकी origin change भी होती है, the uniform motion will be the same. In case of uniform motion, मतलब along the straight line, the distance is always equal to displacement. जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, नो एक्स्ट्रा फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी एट अ इंस्टेंट, मतलब 1 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी है, मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और एवरेज वेलोसिटी क्या है? द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. When we are moving in the uniform motion along a straight line, the instantaneous velocity is always equal to the average velocity.